I cover and or XOR. Then another example is what? That if int x is equals to int x is equals to 48, then z is equals to 0. Then now I pass here z is equals to tilde symbol. Z is equals to, it is called the tilde symbol x. Then I have to print then now I run the file. Okay, tilde of z, tilde of x is 49 minus 49. Okay, it is negative रे convert करियो but minus 9. It is another bitwise operator. सर एटा केमती होला आर तमे जहाँ भी पास करियो ये सब सेम देखियो सिंबल ला काम होजी गोटे नंबर ऐड करियो तो माइनस करियो टाइल सिंबल ला काम होजी bitwise operator बुझियो छी. आज्ञा Then I go for left shift and right shift operator. Then I define another variable y is equals to 13. Then z is equals to left shift operator. The left shift operator 2.
See there, it is showing you 96. Okay, से कहार 96 कला x 49 into 4 कला केते आस केते आसी 49 into 4 196 196 एटा केमती हला हमें जो भी वैल्यू पास करिबा सेटा 2 to the power 2 हे जो माने एठी हमें 2 पास करे माने 2 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर हे गला 4 तो 49 into 4 एठी जदि मु सेमती पास करिवि 3 पास करिवि तो एटे 8 मल्टीप्लाई हो 49 को 8 रे मल्टीप्लाई करो केते होची देखो होची नहीं 392 yes sir बुझी पाइलो संगीता सर आउ थरे देबे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर माने एटा होची लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमें जो भी वैल्यू पास करिवा से कोन करबो x रो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 3 x रो वैल्यू होची 49 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमें 3 पास करछे माने 2 रो q 2 to the power 3 2 to the power 3 हेले 8 तो 49 ने 8 टा मल्टीप्लाई होबो बुझला आज्ञा सर एटा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर तो सेमते हमें यूज करिवा राइट शिफ्ट ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर 3 तो 6 आसेला negative बुझेला केमती हला सर 6 कम जसला 2 रो q केते हला 2 दुने 4 दुने 8 तो 49 डिवाइडेड बाय 8 क्वेश्चन केते आसीबो 6 आसीबो बुझी पाइलो आज्ञा एमे डिवाइड करे नंबर तो तेरा मल्टी लेफ्ट शिफ्ट रे मल्टीप्लाई हला एटी डिवाइड हला
सर कुह तार सेठी तो 49 अछि जदी 8 डिवाइडेड हबो ताले तो होउनी तार रिमाइंडर तो आसीबनी रिमाइंडर मु कहनी क्वोशेंट क्वोशेंट सर आपण कहले ना जे क्वोशेंट ताको हमें डिवाइडेड करबा डिवाइड कला पर क्वोशेंट ता शो करिवो एटा लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर ए दिटा हे गला ओके एटा हला हमरा बीट वाइज ऑपरेटर और तुमको टेर्नरी ऑपरेटर देखितली टेर्नरी ऑपरेटर सर आ पूर्वरु जोटा देखैथिले कोथे ना कोन हां मतलब लेफ्ट साइड सर लेफ्ट साइड ऑपरेटर आगोरु जोटा देखैथिले सेटा टेनारी गोटे नेथिले कोन टेनारी एक एटी गोटे मु डिफाइन करछि आईएनटी एज मतलब एज नेबी देन printf enter a आगे सर एटा हेची बुझी तो माने एज इज लेस देन 18 printf eligible for voting आगे और आगे आगे हेची हाँ तो एटा हो टेर्नरी ऑपरेटर तो एटा हला हमर सब कोन ना डिफरेंट ऑपरेटर ऑफ सी हमें पढ़ले जोटा कि टेर्नरी ऑपरेटर बीट वाइज ऑपरेटर ओके गुटे मिनट जदि हमें सी प्रोग्रामिंग रे किसी कमेंट दबा एटा हमें प्रोग्राम लिखले सपोज मु लिखली एंटर एज percentile d then ampersand age मु एठे गोटे कमेंट दउछ कमेंट तो printf your age is percentile d okay so when you run the program
Okay, so see that it is a comment, or it is called as a single line comment. Comment is used to give what, why you write a code, for defining it. The comment line is used. Okay, it is a non executable part of a program. এটা আমার program রে execute হব नहीं, এটা non executable part of a program. বুঝলা? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗୋଟେ minute. ତାହେଲେ ଆମେ ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଇପାରିବା। ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ଲାସ୍, ମାନେ ସ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ, ଉପରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ୟେସ୍ ସାର୍। Yes, sir. ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା, ବା ଆମେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଠି ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ପଠେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। এটা না মল্টি লাইন কমেন্ট, তারপর আমি ইউজ করব কনস্ট্যান্ট কিওয়ার্ড। দেখো const keyword, const keyword is used for defining a constant. Const keyword is used for defining a constant. तो कौन सी वैल्यू को जब मैं कांस्टेंट डिफाइन କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, तब हम const keyword यूज करेंगे।
ସେଠି ମୁଁ ଡିଫାଇନ୍ କଲି const suppose int a is equals to 10 ये constant define कराला constant define कला पर जदि मैं लिखिबी a is equals to a plus 1 printf ମୁଁ a ର ভ্যালুটা প্রিন্ট করিবি देखो a is equals to a plus 1 जगह मते एरर शो कला तो এটা কাহিଁକି एरर शो कला এটা যেহেতু আমি এটা কনস্টান্ট ডিফাইন করছি ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଶୋ କରିବି ଗୋଟେ percentile d ସେଠି 11 स्टोर कला ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି const डिफाइन कराला एटी हमको एरर देखेगा so constant means you cannot change the value of the variable बुझेला ना मु कमेंट लाइन दे बुझेला संगीता कांस्टेंट Yes, sir. Yes, sir. ओके तो नेक्स्ट वैल्यू हम देखो जी आइडेंटिफाइड डाटा टाइप आ गोटे वेरिएबल अछि बुलियन टा एटा इफ एल्स टा पढ़ला पर हमें देखियो कंडीशनल कंस्ट्रक्टर
तापर होची स्टैटिक कीवर्ड तो स्टैटिक रा एक्चुअली कोन काम रहउची static means only one copy is created so static keyword is used in C programming language. It can be used in both variable and function. हमें जो static keyword था ये डाला static keyword इधर डालना static एटा हमें both variable आगे define करी परिबा function आगे भी define करी परिबा it can be both defined in variable and function that is called as static we can declare a static variable and static function as well as an ordinary variable is limited to the scope in which it is defined. The scope of the static variable is throughout the program. In total program रे हमें ए variable टाको access करी परिबे. तो static variable रे कौन अछि ना static global variable गोटे अछि, static function अछि, static local variable अछि, then हमर static member variable अछि, static method सब रही. तो हमें static यूज करके ये सब कीवर्ड हमें वर्क हमें करी परिबे. So write about static. It is used in the C programming language. It is used in the C programming language with it is used in C programming language with variable and function okay. Next is static global variable. Heading the static global variable. When a global variable is declared with a static keyword, so when a global variable is defined with static keyword, it is known as static global variable. It is declared at the top of the program. It is declared in the top of the program and it is visible throughout the program. Then next is static function. When you define a function as static keyword, then the function lifetime is throughout the program. Means throughout the program, you can access anywhere. But a program सर because आउ थोड़े टिके बतिबे when we define, so when a function is declared with a static keyword, when a variable is defined, oh sorry, when a function is defined with a static keyword, it is known as static function.
सर टिके सर सेरा आउथरे टिके कहूची सर when we define a static keyword तापरे कोन कहउचंदी when a function is declared with static keyword, then it can access lifetime throughout the program. बुझला? आज्ञा सर Yes, sir. तापर लिखो static local variable. Local variable माने कौन? The variable is defined inside a function. जो variable टा गोटे function भितर define करा जाउची ताको आमे कहबा local variable. तो static local variable टा कौन रहइबो? देखो when a local variable is declared with static keyword, when a local variable is defined with static keyword, it is known as static local variable. It is known as static local variable. The memory of the static local variable is valid throughout the program. मैं टोटल प्रोग्राम रे आमे वेरिएबल टाको एक्सेस कर परियो. Sir, आउथरे डाकिबे. When a local variable declare with static keyword, then it is known as static local variable. देखिलो when a आज्ञा. तापर the memory of the static local variable is valid. The memory of the static local variable is valid throughout the program. But the variable scope is limited within the block of function. माने से फंक्शन रो ब्लॉक भितरे बा ब्रैकेट भितरे सेला रहबो. ओके ठीक थाओ काली पुनी एडू स्टार्ट करिवि. स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टार्ट करिवि हला. आज्ञा सर आज्ञा. आज्ञा सर ठीक है. Thank you, sir.